First of all, this is a shout out to all the people sitting back at home in their home country, waiting for their ITA, waiting for their PR, and wanting to move to Canada and feeling very demotivated. You could not have predicted the pandemic. You could not have predicted the backlog that happened in IRCC applications because of the pandemic. Stop being so hard on yourself. Countries move करना बहुत बड़ा decision है and you took it when you felt confident enough and that's when you applied for it. So go a little easy on yourself. Hi everyone, welcome back to my channel Mind the Gap. I'm Jayati और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे fear of missing out और FOMO जो immigrants है कनाडा में आज की डेट में बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हैं unfortunately. As an immigrant हम दूसरे की प्रोग्रेस देख के बहुत बार अपने आप को कंपेयर करते हैं दूसरे इंसान से कि उसकी अच्छी जॉब लग गई, मेरी कब लगेगी, या उसका पीआर आ गया, मेरा कब लगेगा, when will I start my life in Canada. तो बहुत तरह के क्वेश्चंस हम अपने आप से पूछते रहते हैं, बहुत ज़्यादा कंपेयर करते हैं एंड उसकी वजह से बहुत ज़्यादा मेंटल हेल्थ कंसर्न्स हो रहे हैं इन इमिग्रेंट्स. As you already know, FSW draws 2020 के बाद नहीं निकले हैं and a lot of people are either waiting for their ITA or they are waiting for their PR to arrive in their home country and it can be very very emotionally challenging because जब हम मूव करने का सोचते हैं एक न्यू कंट्री में हम इतने सारे ड्रीम्स देख लेते हैं, इतने सारे हमारे हम प्लान्स बना लेते हैं and a lot of people are being very hard on themselves. आप इंडिया में बैठ के कनाडा की वीडियोस देख रहे हो और आप देख रहे हो कि अरे हाउसिंग प्राइसेस बढ़ रहे हैं या फिर अभी 2 वीक्स से गैस प्राइसेस इतने बढ़ गए हैं, तो एक इनसिक्योरिटी बिल्ड होती जा रही है. अरे विल बी प्राइस्ड आउट ऑफ द मार्केट और हाउ विल वी अफोर्ड अ कार, इफ यू अफोर्ड अ कार गैस प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं. सी फ्रॉम द गेट को आई थिंक इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्नॉलेज दैट द मेंटल हेल्थ इश्यूज या प्रॉब्लम्स चैलेंजेस जो इमिग्रेंट्स फेस करते हैं, a lot of times those are very tangible, real problems and understandably so, right? Because when you're moving countries, itne adjustment problems hote hain. You have to start your life from scratch in a new country. It can be very demanding, very hectic, and it requires a lot of your resources, whether it is time, energy, effort. It's emotionally very taxing. आज की डेट में इन द टाइम्स ऑफ पैंडेमिक दैट वी आर लिविंग इन इतने हम लॉसेस बेयर कर चुके हैं दैट 1 out of 3 Canadians राइट नाउ थिंक अबाउट हाउ दे आर गोना पे रेंट और मॉर्गेज. और इस चीज़ की इनसिक्योरिटी इतनी बढ़ गई है दैट व्हेन विल आई फील सेटल्ड व्हेन आई मूव टू कैनेडा. Because of this, depression and anxiety is sharply increasing in new immigrants. So I want to share with you some coping strategies. अब देखो solutions तो नहीं है, right? The frustrations, the problems are there. External problems हैं जिनका कोई as such solution नहीं है. But coping strategies है जो the things that have worked for people who come to the therapy room and talk to me. First is realigning and having a perspective. हम सब सेम एज के हैं और वो कैसे आगे निकल गया, अरे उसने घर ले लिया, अभी वो 2 साल पहले मूव हुआ है. You don't know what the other person has gone through, how the other person has been able to achieve what they've achieved. The most that you can do is learn from them. YouTube पे इतनी सारी stories हैं of people's struggle as an immigrant, of what they did to reach where they are today. So focus on those stories. So don't close off any doors. You don't know what is in store for you. You don't know where you'll be 5 years down the line when you move countries. It's very hard to predict it. What you can do is the next best thing. अगर आप अभी एक international student हो, the next best thing that you can do is maybe start saving little by little, invest slowly in, as a student wherever you can, and get a new job, get a good job according to your position where you are in life. You cannot compare your step 1 to somebody's 10th, 12th, nth step because it's not a fair judgment. The next thing is realistic goal setting. This is very very important to have realistic expectations and realistic goals. Really think about where you see yourself 1 year, 2 year, 5 years down the line. एक आपके dreams है where you want to reach और एक आपको सोचना है how will you reach there, and that's very realistically sitting with yourself and asking yourself where do I see myself and what can I do to reach there. So the most that I can do right now is get a good job, move, find a place to rent and enjoy the new country that I'm in. Do that.
अपस्किल करना जिससे आपको एक हाई पेइंग जॉब मिल सके, हैविंग अ साइड हसल, दैट्स सो इम्पॉर्टेंट इन टुडेज डे एंड टाइम, ताकि आपके एवेन्यूज़ खुल सके। कई बार आपकी जो करंट जॉब होती है वो थोड़ी सी लिमिटिंग हो जाती है एज एन इमिग्रेंट, बिकॉज आप कई बार जब मूव करते हो यू हैव टू स्टार्ट योर जॉब नॉट फ्रॉम द सेम लेवल बट स्लाइटली लोअर लेवल, दैट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ demotivation, that creates a lot of frustration in immigrants. So have a side hustle, have something to do on the side that gives you motivation. Like for me, for example, YouTube is a side hustle or painting is a side hustle that really reminds me the things that I'm capable of and the things that I have to offer, even if right now I'm not doing at my best as a new immigrant in the country. And the third thing is asking the right questions to yourself. I think it's extremely unhelpful to ask yourself, when will I feel settled? When will I be able to afford a house? When will I be able to afford a car? Will I be priced out of the market? Instead, I think the questions to probably ask yourself could be as fundamental as, why do I want to move to Canada? A lot of times हम देखते हैं आसपास सब लोग कनाडा मूव कर रहे हैं, कोई पढ़ने जा रहा है, कोई काम करने जा रहा है, तो हमें एकदम से लगने लगता है आई ऑल्सो वॉन्ट टू गो। इज दैट द रीज़न? या फिर ऐसा है कि अब हमने प्लान्स बना ही लिए हैं या ड्रीम्स देख ही लिए हैं कनाडा जाने के, सो देयर इज नो वे अराउंड इट। A lot of people move here for better quality of life. अब अपने आप को ये क्वेश्चन पूछना इम्पोर्टेंट है इस केस में, व्हाट डू यू मीन बाय क्वालिटी ऑफ लाइफ? डज इट मीन दैट यू वांट क्लीन एयर? अगर मैं अपने घर से बाहर देखूं तो मुझे एक अच्छी सुंदर सीनरी, साफ सुथरी हवा, खाना पानी मिल रहा है, इज दैट क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर यू, विच यू विल गेट द मोमेंट यू रीच कैनेडा, राइट? Are you moving here because of the value of the work that you put in or value of your life? इसलिए आप जा रहे हो? Is that what quality of life means for you? Or does it mean कि बड़े घर में रहना है, डॉलर्स में कमाना है, अच्छा कमाना है? तो ये वाला जो सेकंड पार्ट है ये करने में तो यहाँ पे टाइम लगेगा। आई थिंक इट्स अ वेरी बिग मिसकंसेप्शन दैट हम कनाडा जाएंगे और क्वालिटी ऑफ लाइफ हमारी इम्प्रूव हो जाएगी। इट टेक्स अ लॉट टू इम्प्रूव योर लाइफ मॉनेटरीली, घर लेना या इवन अच्छी जॉब जो आपको अपने कैलिबर के हिसाब से, आपको अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से मिले, वो सब करने में एज एन इमिग्रेंट टाइम लगता है। तो प्रोफेशनल और पर्सनल जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो यहाँ पे रीच करने में टाइम लगेगा। तो वो वाला एक रियलिस्टिक गोल सेटिंग, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है रियलाइन करने। अदरवाइज एज एन इमिग्रेंट यू विल जस्ट कीप कैचिंग अप, और जो क्वालिटी ऑफ लाइफ आपको जल्दी मिल सकती है व्हेन यू मूव टू कनाडा, आप वो भी एंजॉय नहीं कर पाओगे। That's all I have for you today. Please like, share, subscribe. Please let me know what you thought of the video below. If you don't want to write in the comments below, you can also write to me on email. The email is in the description below. See you next week. Till then, take care and bye-bye.